इन्वेस्टिगेशन टू कंसिडर इन इवेल्यूएटिंग वुमेन विद क्रॉनिक पेल्विक पेन आर, क्या क्या कर सकते हैं? जेनेटल ट्रैक्ट का स्वैब ले सकते हैं, किस किस इंडिकेशन में? इन सब में। पोटेंशियल डायग्नोसिस पीआईडी होगा। पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं सस्पेक्टिव पेल्विक मास में, एमआरआई फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ द पेल्विक मास जो डीप इन्फिल्ट्रेटिंग है, और लेप्रोस्कोपी से तो भैया सभी कुछ आप बिल्कुल सामने देख ही सकते हो। फाइंडिंग फ्रॉम द हिस्ट्री एग्जामिनेशन विल डिक्टेट द नीड फॉर फर्दर टेस्टिंग। क्रॉनिक पेल्विक पेन रिफ्रैक्टेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट received with abnormal examination such as enlargement, tenderness, irregularity, or fixity with pelvic structure would indicate the need for further investigation. TBUS is the least invasive and first-line method of imaging and pelvic diagnostic. Laparoscopy is the most invasive test for evaluating the female pelvis and has been regarded the gold standard investigation for CPP. However, depending on the preceding workup, 50% of diagnostic laparoscopy failed to show any cause for the CPP. Structural pathological leprosy can often be surgically treated at the same. Multifactorial nature of CPP should be discussed and explored with the patient from the start. General health advice, including the importance of diet, hydration, exercise, and sexual health, should be given. Analgesia such as an opioid, paracetamol to control pain should be discussed. Where clinical examination are normal, women with cyclical CPP should be offered a therapeutic trial using hormonal treatment to suppress ovarian functions for a period of 3 to 6 months before having a diagnostic laparoscopy. Hormonal treatment include the COCP system and progesterone and growth. Structural pathologies can be treated surgically, usually via laparoscopy, including removal of adnexal mass, treatment of endometriosis and adenomyosis. If the nature of the CPP is thought to be primarily non-gynecological, then referral to the relevant healthcare professionals such as gastroenterologist, urologist, general medicine physician should be considered. If despite the word intervention pain is not adequately controlled, consideration should be given to referral to pain management team for especially pelvic pain. अब की लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या देखिए? कॉमनली एनकाउंटर्ड बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर्स इंक्लूड फंक्शनल टेराटोमा और एंडोमेट्रियोमा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाले. ओवेरियन सिस्ट कैन बी एसिम्टोमेटिक और प्रेजेंट विद पेन एज एन एब्डोमिनल मास. एक्यूट पेन में अराइज बिकॉज ऑफ एन ओवेरियन सिस्ट एक्सीडेंटल सच एज हेमरेज, रप्चर और टॉर्शन. टॉर्शन तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है. TB is the primary test used to diagnose differential types of ovarian cysts along with serological tumor marker. Ultrasound can be used. Treatment is based on the symptom, size and type of cyst. Ovarian cystectomy or even oophorectomy may be required, and this is usually undertaken using a laparoscopy. Endometriosis refers to the finding of an endometrial gland and stroma outside the uterine tissue and is one of the commonest conditions seen in gynecology affecting pregnancy. तो एंडोमेट्रियोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इट यूजली प्रेजेंट विद साइक्लिकल कॉलिकी पेन अराउंड द टाइम ऑफ मेंसेस एंड इज समटाइम्स associated with heavy menstrual loss. However, affected women may also complain of chronic non-cyclical pelvic pain, dyspnea, dysphagia, and severe fatigue. ये मतलब painful stools. Endometriosis is severe tubal and ovarian damage and the formation of adhesions and can compromise fertility. Medical